say something in nutshell rather. So आदरणीय शेषाद्रिचारी जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव, इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के प्रथम टेक्निकल सेशन में उपस्थित सभी विद्वज्जन, सादर नमस्कार. India is an enigma to many of the Western thinkers. Many of us have read so many authors, right? Western authors, Indian authors, Western authors who are of Indian origin like V.S. Naipaul, and we know that what he has written about India, and he says that India is not graspable. I cannot comprehend India, I cannot understand India. So naturally the question arises, why this happened? Even if being an originally Indian, he can't understand, he can't grasp India. And the idea of India, which is, we know it very well. So I think the basic concept is different, because the whole, जिसको हम भारतीय दर्शन बोलते हैं और जो वेस्टर्न थॉट जो बोलता है, इन दो में डिफरेंस है. और इसी की वजह से एज सर एज सेड कि वो जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स जो वेस्ट में साहब बनते हैं, या तो रिलीजन, जिसको हम धर्म और रिलीजन बोथ आर नॉट पैरेलल, वी कैन नॉट यूज़ इट एज ए सिनोनिम. तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये समझ लें, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन जो आजकल नई जनरेशन में जो होती है वो शायद नहीं होगी. तो आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन भारतीय दर्शन एंड इंडियन वेस्टर्न फिलोसॉफी और वेस्टर्न थॉट. तो मुझे लगता है कि तेन त्यक्तेन मुंचिता, दिस इज़ द ओनली थिंग विच वी कैन, विच सफाइज टू डिस्क्राइब द होल इंडियन थॉट, बेसिक इंडियन थॉट, कि हमें जो कुछ भी करना है, इट इज़ नॉट द सेल्फिश एम. वैसे हम सब जानते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो जो 4 पुरुषार्थ है उसके बारे में शायद अनएजुकेटेड लोग भी जानते हैं. व्हाट इज़ धर्म, व्हाट इज़ काम, व्हाट इज़ अर्थ. और जैसे सर ने बताया कि व्हेनेवर दिस मॉनेटरी एस्पेक्ट कम्स, इट्स, लेकिन वैसा नहीं है. हमारे शास्त्रों में कहा गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है. व्हेन वी हैव टेकन बर्थ ऑन दिस अर्थ, वी आर सपोज टू डू सम एक्टिविटीज़ विच आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विथ मनी. लेकिन उसके साथ साथ एथिक्स जोड़ा गया है. जैसे चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी जो उन्होंने लिखा है वो सिर्फ अर्थशास्त्र यानी अर्थ के हिसाब से नहीं है, ऑलवेज एथिक्स, मॉरल, इट इज़ ऑलवेज दैट. तो उन्होंने भी यही कहा है कि यू ट्राई टू अर्न समथिंग, you have to try, you have to earn your living, and for that you have to follow the moral aspect. और वो सबको पता होता है, सब लोग जानते हैं, जो जानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है, तो वो जानते हैं कि इसमें एथिक्स क्या है. गलत करते हैं लोग भारत में, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं पैसे कमाने में, लेकिन अर्थ का जो धर्म है उसका मूल भी है अर्थ. सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, एंड राज्यस्य मूलम इंद्रियजय. तो राज्य इन द सेंस ऑफ गवर्नेंस, जहाँ पे अच्छा गवर्नेंस मिलता है तो उसका इकोनॉमी बढ़ता है. जैसे बहुत कुछ बोला है आदरणीय शेषाद्रिचारी जी ने भी कि जैसे ये कॉरिडोर्स बने हैं और ये जो एक्टिविटी अभी जो हो रही है, जो भी रिनोवेशन चल रहा है, तो इट इज़ ब्रिंगिंग ए काइंड ऑफ रिलीजियस रिसर्जेंस इन इंडिया. और उसे हमने देखा है कि नॉट ओनली इंडियंस बट NRI ऑल्सो आर सो मच फैसिनेटेड बाय दिस एक्टिविटी, कि एक नया ही, जैसे हम कहते हैं कि एक नई हवा फैल गई है. So I'll try to say something in brief. Then what is Western thought? Western thought is basically based on consumption and consumerism, and so that is the problem. They consider that man is at the center of the universe, and so he can consume everything. Everything is meant for the man, and that is what happened for centuries. And so the environmental problem is there. If we had followed
the Indian way of life, like for us, it is a way of life, it is culture, it is religion, everything is intermingled and correlated. So we cannot define them very clearly, or we cannot make any watertight compartments. But people understand what is way of life, Hindu way of life. And if we had followed it, I think many of our environmental issues might not have been created. Again, when we talk about economy and governance, so in almost 400 years ago, Devi Ahilyabai Holkar, the queen of MP, Indore, later on she shifted her capital to Maheshwar. She deployed persons to feed the ants. So that was the aspect that the religious, whatever you call it, cultural aspect, religious aspect, or economy or whatever. Young persons were employed to feed the ants, हम लोग भारत में ये हमारी प्रैक्टिस रहती है, जैसे सुबह गाय को रोटी देते हैं, कुत्ते को भी देते हैं, वैसे ही लोग वो आटे की थैली लेके निकलते हैं और सभी जगह डालते हैं. तो उसके लिए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया था. तो ये एक विज़न था कि पर्यावरण जो है उसकी रक्षा हो जाए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले. सो हाउ गुड गवर्नेंस कैन थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स टुगेदर. तो ये उनका काम था. वेस्टर्न थॉट में ये नहीं है, बिकॉज दे थिंक दैट एवरीथिंग इज मीन फॉर द मैन, सो लेट अस यूज इट, यूटिलाइज. सो utilitarianism and materialism, both the things have marred the whole, what we say, vision of Western people. And that is why the whole crisis of environment and environmental balance is created. On the contrary, ये जो अपना भारतीय थॉट है, जैसे मैंने बोला, हमें चीज़ों को और लोगों को देके और सोसाइटी का, इंडिविजुअलिज्म इज़ नॉट आवर कंसेप्ट, इट इज़ नॉट एन इंडियन कंसेप्ट, इट इज़ अ वेस्टर्न कंसेप्ट. क्योंकि भारत में तो समष्टि का ही विचार है, सोसाइटी का विचार है. ऐसे दैट इज़ वाई एज अनुराग सर सेड कि टाटा बिरला सब लोग, और सिर्फ टाटा और बिरला ही नहीं, सब इंडस्ट्रियलिस्ट, सब टाइकून्स, business tycoons, and even a small person, whatever he earns. हमने कोविड के टाइम में भी देखा, कोविड-19 में, पैंडेमिक में काफ़ी लोगों ने अपनी हैसियत हो नहीं हो काफ़ी डोनेट किया, सबके लिए केयर की. और दैट इज़ वाई इंडियन इकोनॉमी अगेन वेरी फास्ट इट रिकवर्ड. इवन टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेशन इन UK, US, इकोनॉमी इज just shattering. And India, we are almost sitting with a peaceful mind. We are not that much worried about inflation and recession. So this itself shows that Indian economy is unique, and it is unique because of this cultural impact on Indian economy. So temples and religion, culture, there are so many things which are associated with temples. As sir talked about flowers, it is not flowers. There are attire of gods, which are every day people come and purchase so many small things, from small things to the what we say ornaments, golden and silver ornaments. So that creates what we say variety of sources for employment. So that way it is done. Every person is willing to donate somewhere, someday, particularly on festivals. We have a tradition to donate something, to give, clothes and food items to the Brahmins. And now people have started, if they don't give it to Brahmins, they give it to others. So this is the basic concept of Indian thought or Indian darshan. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. So this is the basic ideas, or what we say, basic difference in the thought which makes our culture very different from the Western world. So many people have said, Pandit Deendayal ji Upadhyay have also said कि our culture or civilization should not thrive on exploiting the nature. Our whole Indian thought
is, it is inclusive. And as sir said, there is a thought behind everything. It is scientific also, it is religious also, and there is a very futuristic vision also. So, nature will sustain, and in return, only milking of nature it is advisable rather than exploitation. This should be our aim. The system should be such that overflow from nature is used to sustain our lives. मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि एतद्वेष प्रसुतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरेत पृथिव्याः सर्वमानवाः. That means people from all other the countries of the world should learn lessons in how to lead happy and contented way of life from the cultural leaders of this land, that is Bharat. सबको सीखना चाहिए भारत से कि कैसे हमें लाइफ को जीना है, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए. It should never be only money making, but there are so many ethical aspects, moral aspects, religious and cultural aspects which make the whole world happy. So in Indian thought, it is not merely thought of being happy oneself. It is not selfish. So it is the thought of related to society. As it is already said, but during Navratri, this time also, it creates so much what we say economic opportunities for all and sundry. Small, ornaments and so many things. So this is all I think I should end up my whatever I want to say. There are so many things which might have been repeated, but I am quite happy and thankful to this forum and RIS as well as academic partners as well as EDII particularly, those people who have provided me with this opportunity to talk with you. Thank you. Thanks. बहुत कम शब्दों में आपने बहुत कुछ बताया. Of course, time is a constraint, but one of these days I think we should have a larger lecture on those ideas which you have said, especially about the idea of